अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना खान. आई एम CIO एट हॉस्पिटल और पॉडकास्ट के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. पॉडकास्ट का मतलब हमने बिल्कुल एक पैराडाइम शिफ्ट किया है और पॉडकास्ट में हम बहुत इंडस्ट्री लीडर्स को, गुरुज को, एक्सपर्ट्स को, एक्सपीरियंस्ड एंड सीजन प्रोफेशनल्स को बुला रहे हैं ताकि वो अपनी लर्निंग, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने एक्सपोजर को आपके साथ शेयर कर सकें और आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि शायद आप बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद उसका क्रक्स निकालेंगे. वो आपको 15 से 20 मिनट की इस पॉडकास्ट में बहुत सारे इंडस्ट्री लीडर्स अपनी ज़िंदगी का, तजुर्बों का निचोड़ दे के बता देते हैं. तो आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में एक बहुत ही ख़ास शख्सियत मौजूद हैं. इनके बारे में इंट्रोडक्शन के अगर मैं कीवर्ड्स बोलना शुरू करूं तो एडजेक्टिव्स की एक बहुत लंबी लिस्ट होगी. तो हमने सोचा कि मैं इन्हीं से पूछ लूं कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन करते हैं. 2 कीवर्ड्स मैं बोलने वाली हूं और ये 2 कीवर्ड्स और मजीद और बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स आपको जस्टिफाइबल लगेंगे बाय द एंड ऑफ द वीडियो. मेरे साथ मौजूद हैं शफात हाशमी साहब. बाय नेचर ही इज़ अ गिवर, जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे से हैं, किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से, किसी भी एज और जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी भी शोबे में लर्नर हैं या किसी भी शोबे में एक्सेल करना चाहते हैं. गिविंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है. नंबर 2, ही इज़ वेरी वेरी स्मार्ट, ही इज़ इमोशनली इंटेलिजेंट. और इसके अलावा जो इन्होंने नहीं बताया मैं अपने खुद से ऐड करूँगी, जब भी ब्रांडिंग का, मार्केटिंग का, एंटरप्रेन्योरशिप का, विनिंग बिजनेस आइडियाज़ का नाम लेते हैं तो सबसे पहला नाम हमारे जहन में आता है शफात हाशमी साहब का. तो अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. Thank you for such an elaborate introduction, Sana. Great, it's great to have you here. शफात साहब, ऑडियंसेस को ये बताइए कि विनिंग बिजनेस आइडियाज़ की जो मैंने बात की, या अब आप राइट नाउ जिस स्पेस, प्रोफेशनल स्पेस में हैं, वहाँ तक आने की मोटिवेशन क्या थी? 2 questions, right? Winning business ideas is a simple thing. Not that something that you dream of and just relate it personally. It could be a dream, it could be a good idea, but it doesn't have to be a great business idea. Because in a business idea, what is important is that it has to be unique. Right. It shouldn't be mundane. It should be efficient, just to begin with, from a process angle. The third thing is it should provide convenience and a value proposition. Having all of those things together, usually these days we leverage on technology to make things more efficient and add, artificial intelligence, justify through big data. Then I think you need to have some kind of validation. It has to be scalable, it should be monetizable, and most importantly, it should have a pre-existing demand, so to speak, right? Then you need to have the expertise to execute it. This is what a winning business idea is all about. So yes, there are different routes with an MVP, without an MVP, and so on and so forth. We can go about it. But, when a lot of people, when we think of ideas, our ideas are not that big enough. Because it's very Pakistan-centric sometimes, it's very Lahore-centric, it's very community-centric. Right. And it's more about कि वो मैंने e-com website बना दी और मैं buyers और sellers को meet कर रहा हूँ. So it's very, a lot of ideas that I come across are more matchmaking. But revolutionary ideas like creating a bulb, or having a transistor, that is a winning business idea, which is, or things in renewable energy, things in robotics, things in medtech or health tech, and coming with some robotics, some AI-driven stuff, or even processes. जैसे Amazon की जो warehousing facility है, वहाँ पे robots काम करते हैं, like huge screens and over and on. So those are great ideas. What brought me here? That was the second question. Yeah. I am basically an artist. I love to paint as a kid and play music. Great. But मेरे अब्बू ने मुझे उंगली पकड़ के कहा कि तुमने आर्टिस्ट बनना. मैंने कहा जी. कहते हैं मैं तुम्हें आर्टिस्ट दिखाता हूँ. So मैं जिस आर्टिस्ट को मिला उनमें से less than 1% were those who were rich and successful. 99% were on the streets. Right. So he said, Shafaat, you're sitting in a place where arts is very competitive and you may not make a lot of money. So I was like, okay, what is this business? What is this thing that can make me money and I can still have my, passion for arts? Advertising was the answer. Marketing was the answer. So I got into that. So once I learned how to market, I learned how to sell. But if you don't have a product or a service which is sellable, right, doesn't matter how well you market it or how well you sell it. And that, nurtured in me entrepreneurship. Right. So coming up with products and services which are unique, which have a solid drive and a value proposition, and is obviously can be resonated
with the customers. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. Addressing the needs and the pain points. Very good. अच्छा, जहाँ पे हम आइडियाज़ की बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, एक बहुत मशहूर कहावत है कि जब आप नया आइडिया लेना चाहें तो पुरानी किताब पढ़ें. तो किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए, किसी भी मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए, या एज सच इन अ ब्रॉडर सेंस किसी भी इंसान को इंसान बनाने के लिए रीडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? Leading as in? रीडिंग. Reading. Reading is one domain or one tool of knowledge acquisition. So the knowledge that we acquire basically is inevitable. Right. So what you see, what you hear, what you breathe, what you smell, what you taste, what you touch, many things are inevitable. Right? So aap chahe ya na chahe, the moment you wake up, you start consuming information. Right? Right. Now it's up to you that what are the areas you want to focus at. Like sitting next to you, I'm focusing at you. Right? So I've never focused at you before. We met so many times, right? Right. But you choose to set your focus. Right. Similarly, you choose to set your focus on a book, on a Netflix documentary, on so many videos out there on YouTube, and you're like, okay, my focus is this and this is the solution I'm looking for. So knowledge acquisition is experiential learning. Right. It's lectures, it's mentorship, it's बुजुर्गों के कदमों में बैठ के फैज़ हासिल करना, in other words. And there are so many ways. So you can't say that reading is the only channel. But probably it's a great place to begin with for a lot of people. It's a good place because you have your own time, you can run through certain things. बिल्कुल. But I think with tech these days, listening to a 15 minutes TED talk or a shortened version, a crux of a summary of a book, perhaps is less time wasting than going through like 10,000 pages of books. बिल्कुल ठीक है. हाँ, वो एकदम इन्फॉर्मेशन की जस्ट आपको बता रहे हैं. टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिसर्च पेपर्स. ठीक हो गया. अच्छा, टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे हैं, और अभी जैसे आपने भी कहा कि टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी एक प्रो है उसका, या एक अच्छी साइड है उसकी कि वो बहुत सारी चीज़ों को आपके बहुत करीब ले आया है. टेक्नोलॉजी का मैं समझती हूँ एक कौन या एक जहमत ये भी है कि देयर टन्स एंड टन्स ऑफ इन्फॉर्मेशन. फोकस करना एक तो बहुत मुश्किल है. अटेंशन डेफिसिट बहुत बढ़ गया है पहले से, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टिमुलाई अराउंड यू ऑल द टाइम. तो एक एवरेज लर्नर जो कि ई कॉमर्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में या इवन जॉब मार्केट में भी आना चाहता है, वो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में डिफरेंशिएट कैसे करे? You pay peanuts, you get monkeys. You get something for free. The result will also be that you will be struggling for the rest of your life giving free services. Pay for information, pay for data, and go for paid learning. Right. So once you go for paid learning, then you exactly know what are the best learning platforms to go with. The problem with a lot of people is that there is a free course and you want to sign up. So you waste 30 minutes, 2 hours, 3 days on a free course and it doesn't give you anything. Right. So the problem is that majority of the stuff which is out there is not skill focused and it's somehow not even holistic. Right. बिल्कुल. So if somebody wants to become, let's say, a web developer, in my humble opinion, that web developer first of all needs to understand layouts, content writing, advertising to begin with. He needs to understand how different sectors have to be represented on a different website. Then he needs to learn semiotics, colors. He needs to have basics of Photoshop and Illustrator to understand how to represent a product. बिल्कुल. He should understand animations. And then he should also understand obviously the coding, whether it's WordPress or Shopify or Magento, whatever platform he's working on. बिल्कुल. He needs to understand. Then most importantly, he needs to understand how the integration and pixels work, integrating with Instagram, social media, and how does all of that work. बिल्कुल. So the problem is that over here, a typical web developer doing a 30,000 रुपए का course, all they're told is the WordPress interface. हाँ जी, बिल्कुल. And then you become a web developer. So there is no value addition. Therefore, the output that these people come up with, they're more like computer operators. So you need like 6 computer operators, and then you need a person on top who's looking after those 6 people, guiding them, spoon feeding them, किसको ऐसे करना है, ऐसे करना है. बिल्कुल. And even after 2 years of those guys working, they still don't get the gist of it because they haven't acquired
प्रोफेशनल स्किल्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये दिस इज समथिंग दैट आई रियली रियली वांटेड टू टॉक अबाउट एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपने एक ही सवाल के जवाब में वो सब चीज़ें समेट दी हैं। जब हम तालीम और हुनर की बात करें, जो आजकल एक बहुत मशहूर कैंपेन भी है, ख़ास तौर पे जब फ्रीलांसिंग ई कॉमर्स की बात पाकिस्तान में बहुत शोर उठा 3-4 साल पहले, और अभी भी हमारा ये ख्याल है, एक्सपर्ट्स का ये ख्याल है कि बिकॉज एक स्किल के पीछे और एक स्किल के पीछे भी इंटीग्रेटेड सर्विसेज या वैल्यू एडिशन को लेके नहीं, बल्कि इट्स मोर लाइक रोबोटिक ऑपरेटेड या कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेटेड सर्विसेज बेस्ड सिस्टम, वहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन सर ने जैसे बात की कि इफ़ यू आर अ ह्यूमन यू नीड टू वर्क एंड थिंक एज अ ह्यूमन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बना रहे हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाला इंसान का दिमाग है, तो इंसान को इंसान की तरह सोचना चाहिए ताकि वो अच्छी सर्विसेज और अपनी वैल्यू एडिशन ज़रूर कर सके जिस भी चीज़ में या जिस भी शोबे में आप सीख रहे हैं। सर, स्किल्स की जब हम बात करें, आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा विजन है कि स्किल्स को पाकिस्तान में स्किल बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया जाए फॉर यूथ, लर्नर्स तक ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाई जाएं जिसमें वो एक फोकस्ड स्किल के ऊपर, टारगेटेड स्किल के ऊपर काम कर सकें। माशाल्लाह से आप बहुत चीज़ें इसके ऊपर कर भी रहे हैं। पाकिस्तान में इसका एक तो स्कोप बताएं क्या है, चैलेंजेस बताएं क्या है, पाकिस्तान की मार्केट रेडी है या नहीं? Very good question. I'll go into a little bit of a perspective of Pakistan. Only if you permit. Of course. China is a superpower, which became a superpower economically, right, because of focusing on one market, US consumer market. Right, absolutely. Agreed? Now, when US came up with this beautiful American dream in the early 80s, so understand the revolutionary periods. So you had transistors, then you had sharp gold star TV electronics का दौर आया, उसके बाद कंप्यूटर्स का दौर आया जिसमें वो 486, 386 एमेगास आना शुरू हो गए, फिर मोबाइल फोन आना शुरू हो गए, वो मोटरोला का पुराना सा एक सेट होता था, पाकटेल आ गया, you know, so the mobile came in. Then was the time of internet also. So you had the dial-up internet connection and people were acquiring that. Right. During the same time, the information sharing through dish antennas became more common and cable network was introduced. Okay. Every single revolution that came, somebody made a lot of money. Right. Right? Because economies kept picking up. Somewhere in early 2000s, it was tech, digital marketing, and obviously it was real estate, which boomed because global population was growing. Okay? A lot of people made a lot of money in real estate. Problem kya hai? Be it Christian Dior, Ralph Lauren, Levi's, Edbar, you name the brands, Tommy Hilfiger. Okay? वो brands उन्होंने बनाए हैं. पाकिस्तान, चाइना, ताइवान, बांग्लादेश, फिलीपींस और एनी डेवलपिंग कंट्रीज, हम लोग टेंडर पे फाइट करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है. सो टू अंडरस्टैंड दिस, पाकिस्तान हैज नेवर क्रिएटेड अ सिंगल ग्लोबल ब्रांड, बी इट यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट व्हिच इज ग्लोबल. Right. Okay. Be it in apparel industry, be it fashion, be it Apple, be it Microsoft, be it vaccines, be it Pfizer or Novartis. Right? So we are not the brands. So first of all, we need to understand कि हमें ब्रांड बनाना नहीं आता. Okay? बिल्कुल. Brands उनको बनाने आते हैं. Textile industry of Pakistan boomed because of outsourcing. हाँ जी. ठीक है? बिल्कुल. जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, NetSol Technologies, NetSol became NetSol because they were getting business from foreign countries, outsourced to Pakistan, executing it at a great level, and giving it back. And today, NetSol is one of the largest software houses of Pakistan. 20 years in business. Right. Right? But do we have our own product? Do we have our own Windows? Are we at that level of creating a new Windows operating system? No. No. ठीक है? So if China can become a superpower as the outsourcing hub of the world, why can't Pakistan become the outsourcing hub of the world? Whereas China को तो Chinese language barrier भी था English के साथ communicate करने में. बहुत ज़्यादा. पाकिस्तानियों को तो अंग्रेजी आती है, right? But still we have a two-tier problem. Problem number one, our character and value system, which is integrity of work. बिल्कुल. Okay. Amazon पाकिस्तान में आया and we all know what happened. बिल्कुल. That's integrity issue. Okay.
टेक्सटाइल पाकिस्तान में आया, इंटेग्रिटी इशू. फ्रूट वेजिटेबल एक्सपोर्ट किए, कॉटन एक्सपोर्ट किए, बीच में पत्थर डाल के भेज दिए, इंटेग्रिटी इशू. बिल्कुल. So nobody should come and say, oh, we never got the opportunities. You have the opportunity. We had them all along. You guys have a very bad value system. हाँ. ठीक है? So behind the beard, behind the hijab, or behind a clean shave, or behind whatever, there's a whole problem of character, value, business and ethics. and business ethics. बिल्कुल बिल्कुल. The second problem is, yes, we are an intelligent nation, but at the same time malnutritioned, frustrated, you know, and we don't have the skill. We don't have the skill. Right. We are not focused. पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो डेडिकेटेड 9 to 5 100% फोकस के साथ काम करते हैं? बहुत कम. ओके, हार्डली आप 90% ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, 3 घंटे से ऊपर कोई बंदा इस मुल्क में काम नहीं करता. 3 hours is your dedicated work. Everything else is a waste of time. फोन उठा रहे हैं, फेसबुक चेक कर रहे हैं, इंस्टा चेक कर रहे हैं, लिंक्डइन चेक, you know, 2 घंटे लंच आवर में गुजार दिए. coordination, stuff like बिल्कुल that. बिल्कुल. So until and unless we do not impart not only skill, but the right attitude and character to work, matching it with your natural aptitude, that's one. And B, we impart the right skill. Right. Okay, the right skill. I'm not talking about dummy skills. You know, that there are like you know how many coaches, mentors, and self-proclaimed prophets are out there. You know it and I know it. हाँ बिल्कुल. मोटिवेशनल स्पीकर के नाम पे, इस नाम पे, उस नाम पे, सब just total BS. Open ended skills का प्रोग्राम पूरा बना के बेच रहे हैं. Focus नहीं है. Open-ended skills, but the most important thing is ना, okay, if I teach entrepreneurship, right, I am eligible to teach because you've been one. Because I am currently an entrepreneur for the last 20 years. Right? Definitely. ठीक है? लेकिन if I am paid the same 3,000 रुपया per lecture, will I be enticed to teach? Of course not. Right? But if you're having a professor teaching marketing जिसने जिंदगी में कभी एक कैंपेन भी लॉन्च नहीं की, जिसको एड सेट बनाना भी नहीं आता इंस्टाग्राम के ऊपर, right, तो वो जब लोगों को मार्केटिंग पढ़ाएगा तो लोग कौन सी मार्केटिंग सीखेंगे? ठीक है? इसी तरह से if हम किसी को कोडिंग सिखाते हैं, पूरे पाकिस्तान में कितने 3D प्रिंटर्स हैं? ओके, मोबाइल फोन is not a luxury, it's a necessity to do business. Right. The taxation on mobile phone is ridiculous. Laptop is a necessity for Pakistan to become a skilled nation. बिल्कुल. I fail to understand why there has been a campaign A, against giving free laptops, and B, having it tax free, but there should be a subsidy on importing laptops. This is what Pakistan needs to be at. Facilitation. Right? Why are we still struggling calling Storm Fiber, PTCL, and so many names with the worst internet service in Pakistan? And these are the honest, brutal truths of this country. बिल्कुल. ठीक है? लोग जिसकी 60,000 रुपए इनकम है, उसके माँ बाप 1-1 रुपया सना जोड़ के, लिटरली 1-1 रुपया जोड़ के, सफेद पोस्ट लोग, आई नो इट, आई नो पीपल जिनकी अम्मियों ने ज्वेलरी बेच के बिजली के बिल पे किए और अपने बच्चों की एजुकेशन की है, राइट? वो बच्चा एक स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में जाता है, 40,000 रुपए दे के 6 महीने का कोर्स सीखता है, और वो समझता है कि मुझे इस पे ROI मिल जाएगा. व्हाट ROI? पाकिस्तान में यू ट्राई टू बिकम अ डॉक्टर, एटलीस्ट 2 करोड़ में आप डॉक्टर बनते हैं, MBBS, राइट? 50,000 रुपए की आपकी नौकरी लगती है, आप मुझे उसका ROI कैलकुलेट करके बता दें. अब अगर वो डॉक्टर फार्मेसी से अंडर द टेबल कट्स ना ले, कमीशंस ना ले, और डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ टाई अप करके और उनसे कट्स ना ले, तो उसका 2 करोड़ का ROI बराबर ही नहीं होता. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. Same is true with MBA. So I think there is a broken education system, there is a broken value system, and I think our society is going into a tangent of 2 extremes. Oh yes. One who are staunchly religious and stronger beliefs, and be it their belief in one of the political parties, and you understand what I'm talking about. हाँ जी, बिल्कुल. ठीक है? कि there is we are becoming less and less patient, right? Okay, and the second one is the tangent of becoming a complete dahriya, who is like, I don't care, and it's okay to do 1, 2, 3, 4 things, and it's okay to take away someone's rights, and it's okay to cheat, it's okay to date, it's okay to do all that stuff. So हमारी 2 extremes बन रही हैं, और इन दोनों extremes का
हमें कोई फायदा नहीं, बिकॉज ये दोनों एक्सट्रीम्स हमें फोकस नहीं कर रही स्किल डेवलपमेंट पे. द लास्ट पॉइंट आई रियली वांट टू ऐड इज आवर फैमिली सिस्टम्स इन पाकिस्तान. 42 साल का बंदा या लड़की अपने घर पे बैठी हुई है 2 बच्चे लेके, और सास उससे बिल पे कर रहे हैं या रेंट पे कर रहे हैं. प्रॉब्लम. ओके, हाउ वुड यू वर्क? व्हाई इज इट दैट 18 years के बाद व्हाई पेरेंट्स डू नॉट थ्रो देयर कैन किक देयर किड्स आउट, कि बाहर निकलें, अपनी एजुकेशन के पैसे खुद पूरे करें. आई विल सी कि आप कैसे फ्रीलांस काम नहीं करते. आई विल सी कि आप कैसे पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स में नौकरी नहीं करते. यू नो, राइट? बट वी चिल्ड्रन आर सिटिंग एट देयर कंफर्ट जोन्स. बहुत मार्का जो कोई मारता है किसी घर में, तो एक 10 मरले के घर के अंदर 3 बिजली के मीटर्स अलग हो जाते हैं 4-4 हजार रुपए पे, कि जी आप अपना 6,000 रुपया बिल दें, आप अपना 8,000 रुपया बिल दें, एंड दैट्स अबाउट इट. बट खाना भी वही बन रहा है, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, फिर 6 महीने के लिए अलग हो गए सारे, फिर साल बाद सारे इकट्ठे हो गए, बिकॉज यू कैंट रन द शो, राइट? बट वेयर इज द ग्रोथ एंड दिस एंटी फॉरेन सेंटिमेंट कि जी अमेरिका ऐसा है, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है, कनाडा ऐसा है, तू सानू हमें बुढ़ा छोड़ के चले जाओगे. यार उस बच्चे को, उस बच्ची को जाने दो, राइट? उसका जो एक और बुरा पार्ट है वो क्या है कि हमारा कल्चर इतना घुटा हुआ और सफोकेटेड है कि जब वो लड़का या लड़की यंग 20 years 21 years जब वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, दे स्टार्ट गेटिंग लेड. Because that becomes the focus. That becomes the focus. So it's party. They try drinks, they try drugs, they start sleeping around. और 4 साल में उनको पता लगता है, oh shit, did I really lose my integrity, my chastity, my virginity, my goodness, my greatness? और 5 साल बाद वो सीक्रेट को डंप करके जब अपनी जिंदगी चलाते हैं, तो क्या होता है? डिप्रेशन. 10 साल बाद वो Xanax, Alp और पता नहीं क्या क्या दवाइयाँ एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे होते हैं, एंड अल्टीमेटली द गेम इज डन एंड डस्टेड. सो इट्स नॉट जस्ट द चाइल्डहुड ट्रॉमा. आई थिंक द core challenges are way bigger, and frankly speaking there is nobody to blame but people who are at my age group who haven't done anything for the country. अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग जवाब था, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल का, एंड आई थिंक कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मुझे भी बाद में रिवाइंड करके सोचने की ज़रूरत पड़ेगी. सिर्फ आखिरी सवाल मैं ये करूँगी कि आपने सबसे पहले अपने आप को अकाउंटेबल ठहराया कि ऐसे लोग जो कि कर सकते हैं और वो अभी तक नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे फॉर वन रीज़न और द अदर, बट आई नो हाउ यू हैव बीन ट्राइंग विद अ वेरी गुड विजन फॉर पाकिस्तान, के पाकिस्तान को आप टॉप पे देखना चाहते हैं, वेयर पीपल शुड कम एंड गेट द स्किल्ड पीपल, टारगेटेड एंड फोकस्ड स्किल. उसके ऊपर आपने बात भी की, बहुत ज़्यादा देखती भी रहती हूँ मैं कि आप इसके लिए बहुत पैशनेट हैं, आप काम भी कर रहे हैं. सो वी आर होपिंग कि कोई ना कोई टेंजिबल चीज़ पाकिस्तान में हम लोग देखेंगे आगे. आपके अलावा और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो ई कॉमर्स में, फ्रीलांसिंग में और स्किल डेवलपमेंट में, ख़ासतौर पे अब गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के बाद अब जैसे बहुत सारे लोग एक्टिवली इसके अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इम्पैक्ट भी बिल्ड कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स भी इसमें बहुत काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स हम आगे देखेंगे. आप अपने आप को अकाउंटेबल समझ रहे हैं, एक मैसेज ऐसे लर्नर्स के लिए, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए दे दें कि अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, टू लर्न एंड टू अनलर्न and to relearn, not only the educational or academic part, not the industry knowledge wise part, but also for who you are as a person and how the dynamics of society are around you. कितना important है? My one last message would be stop blaming and stop complaining. And start acting. And start acting after thinking. Okay. Planned, a lot of our youth action is also going half naked on Instagram and jumping around left, right, and the center just to become famous. That is also action. Planned. Okay? So you need to plan. You need to think through it. And before you act, you need to know that what will be the impact. So if you spell impact, it is IMPACT. So importance of that action, how important it is of that act, that would make impact. Bilkul. Right? So you don't just act, you choose, you prioritize. Okay? Definitely. What is your priority? How important it is for you to act, and that is what will create an impact. Bilkul.
So the problem with a lot of us is that government ऐसी है, मौलवी ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ने ऐसे नहीं किया, मेरे टीचर ने ऐसे नहीं किया, मुझे कोई मेंटोर नहीं मिला. बिल्कुल. Bloody hell, you don't find a mentor, you don't find a mentor. You know, go learn, get out in the market. You think you can sit on your couch thinking in your head कि यार पता नहीं कोई मिरेकल हो जाएगा और मेरे पास $100 आ जाएगा. It's not about $10, $100, $200. जब even when we do hiring Sana in Pakistan in our local office, और बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग करते हैं, वो झूठ बोलते हैं. ओके. जी मैं तो 1.5 लाख रुपए कमाती हूँ, मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ, आप मुझे 2.5 लाख सैलरी देंगे तो मैं काम करूंगा. मैं कहता हूँ अच्छा अपना फाइबर का अकाउंट ले आओ और मुझे जस्टिफाई कर दो कि तुम 2.5 लाख रुपए तुम्हारी इनकम है. जैसे मैं ये कहता हूँ भाग जाते हैं. एक्चुअली वो 25,000 रुपया कमा रहे होते हैं. तो जब तुम अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो, हमसे भी झूठ बोल रहे हो, राइट? Moreover, you're not ready to learn. If I'm a programmer and let's say I'm doing freelancing, I would love to do 4 साल 5 साal of job in TESOL to understand the bigger picture, to understand how larger softwares are developed, right? To learn the systems, to learn best practices, to learn efficiency, to learn processes. I think it's important for learning It's process. very important. I myself, I was born in a business family. My father was a fighter pilot, very well decorated GDP, okay, sword of honor, okay. 90s mein he took early retirement, and because we come from business family backgrounds, we went there. So जिस time पे मैं managing partner का business card लेके फिरता था with the second largest aluminium manufacturer in Pakistan, goes by the name Pakistan Alco. Everybody must have heard of it, very famous. बिल्कुल. One was Alcop and one was Pakistan Alco. ठीक है? So we were partners in Pakistan Alco. And we had businesses in Lahore Stock Exchange, and we went to stock market. Stock market, you know, you mint a lot of money. हाँ जी. So, even at that time, जब मैंने अपना MBA किया, so जिस time पे मैं 4.5-5 लाख रुपए महीना अपना कमाता था, मैंने उस time पे 35,000 rupees की नौकरी की, एक corporation में, Right. Levi's में. फिर मैं जब यहाँ से दुबई गया, तो हमारा already pre-established business था दुबई में. मेरे अब्बू ने कहा बेटा आई कैन गिव यू $1 million, $1.5 million दिरहम, आप जाओ वहाँ पे अपना कारोबार शुरू कर लो, तुम्हारा शौक पूरा हो गया नौकरी का. मैंने कहा डैडी आई डोंट नो द मार्केट डायनामिक्स ऑफ दुबई, ओके, लेट मी डू अ जॉब फर्स्ट, लेट मी अंडरस्टैंड फ्रॉम अ प्लेटफॉर्म हाउ द मार्केट वर्क्स. बिल्कुल ठीक है. ओके. तो फिर मैंने वहाँ पे 2 साल नौकरी की, ठीक है. एंड आई बिकेम, अल्लाह का बहुत करे, मैं आई केम इन एज अ मार्केटिंग मैनेजर, क्योंकि वो कहते हैं आपको दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है तो यू स्टार्ट विद लो लेवल, राइट? 6 महीने के अंदर आई बिकेम ग्रुप मार्केटिंग हेड. देन आई स्वैप, आई बिकेम अ डायरेक्टर फॉर स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग. आई वर्क द क्राउन प्रिंस ऑफ शारजाह, शेख फैसल अल खासमी, इन हिज कंपनी, नेक्स्ट टू हिम, ओके. Then I moved to another company, Loans Range, again as a director. I was making like $12,000-15,000 a month salary, plus commissions. ठीक है? Money started pouring in. I was sitting at a question mark. Should I continue making commissions with a permanent income of salary, or should I call my dad and say, Dad, वो जो $1 million दे रहे थे वो अब दे दे. So this is what I did. I said, Dad, keep your $1 million with you, but don't keep it in Pakistan in Pak rupees because of inflation. Let me put up a dollar account, convert it in dollars, and just keep it. Okay, so he kept it there, and I started my business with my own capital, with my own savings. All right, and from there today, Sana, I have 14 international offices for my advertising marketing firm. We are a registered investment firm out of Zurich and Abu Dhabi, okay, with a hundreds of millions of dollars of threshold in terms of, you know, asset management, dedicated funds, mergers and acquisitions, JVs, pre-IPOs, and venture capital. Right. I sit as a board member and an equity partner in 26 startups globally, and we have 42 portfolio companies that we manage. How did I achieve this? The art of delegation. The art of having the right core team with you, okay, who are aligned with your shared vision. And now, it's not about money. It's about awareness, and it's about taking those small steps forward, and then take a giant leap forward into positioning Pakistan as the preferred business process, business marketing, and business sales outsourcing country in the world. And I hope we can achieve that.
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे कहने की मेरा ख्याल है आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, आपने सारा कुछ pretty much कवर कर दिया। प्रेफर्ड के ऊपर आपने बहुत एम्फेसाइज किया, और मैं ये चाहूँगी कि हमारे ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को, इस पॉडकास्ट को, आई एम रियली श्योर कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपको इस पॉडकास्ट को बहुत बार रिवाइंड स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे शफात साहब ने कलेक्टिवली हम सबको दावत दी है कि अपनी फहम और इदराक के दर वाह करें और थोड़ा सा सोचें कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और ज़रूर इस बात को सोचें और अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप के लिए आगे लाएं, अपने लिए भी और इन द बिगर पिक्चर मे बी फ्यू इयर्स डाउन द रोड पाकिस्तान के लिए भी। थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन। दोबारा एक और पॉडकास्ट के साथ इसी जगह इसी चैनल पे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। की टेकअवेज, क्या सीखा, क्या नई चीज़ रिसर्च की शफात साहब ने, आपको क्या सोचने में मजबूर किया, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।